Yes, sir. Okay, so last class, I hope you understood the contribution of different terms in the form of potential. So just you will have to remind me that if I want to write a potential, it will be V monopole plus V dipole. It is a scalar quantity, it can be added. It will be V, yes, Yes, sir. quadrupole Yes. plus octupole dash dash dash. Right? So it is something like this. Suppose at large distances I want to see, so suppose the contribution of this is 3 volt, then dipole is contributing and it is say 0.5 volt, and then at large distances suppose this contribution is 0.05 volt, and in this way they all will be contributing. So because this is 1 by r, so large distances पे ये सबसे बड़ा होगा. This is 1 by r square, ये उससे छोटा होगा. This is 1 upon r to the power 3, ये उससे छोटा होगा. Contribution, right? Obviously it will depend on the charge configuration also. So we have seen that monopole is so simple. A simple charge q at distance p, it is r. What was the potential look like? जल्दी जल्दी बोलते जाओ भाई. V monopole was 1 by 4 pi epsilon naught, yes, q by r. Simply if I write, correct? If I write for a dipole p at some point p, and suppose this is angle theta, so what will be V dipole? Yes, 1 by 4 pi epsilon naught r P cos square. theta by r P square. cos theta upon 4 pi. 4 pi epsilon naught p P dot cos theta r over r square, r square. right? This will be the dipole contribution. Yes, sir. And we can write every term in the form of densities also. You remember that or not? Because we have Yes, sir. we have put lot of effort and derive it from the scratch in the form of legendary polynomial. और आपने देखा अपने आप P0, P1, P2 legendary polynomial ही था जो cos theta वाला function था. So that was also a method to derive different terms of legendary polynomial, right? So जब मैं इसको लिखूंगा तो ये कैसे नजर आएगा? अगर मैं इसको पहले तो इसी को ऐसे लिख देता हूं. This was P dipole, and similarly we can write all the terms. So tell me in the form of the densities that I have written. How it will look like, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था. सब लोग को देखो अपनी कॉपी में जरा. Yes, sir. 1 by 4 pi epsilon naught r rho r d top. बताना जरा. VR is equal to first term 1 by 4 epsilon naught, right? 1 by r integral rho Rho r dash. r Rho r dash dash d. d tau dash, D tau. right? This was the first term. Yes, sir. So I can Yes, call sir. this as monopole. Mono. The second term V dipole. This will become 1 upon 4 pi epsilon naught 1 by r square integral r dash rho Rho r dash d tau. and d tau dash. You can see that dimension, it is so easy na to write it. So, and with this r dash there was a term of cos theta also. Yes, sir. Cos theta dash. Cos theta dash, and then Rho r dash d. rho r dash and d tau dash, right?
and this was known as dipole. And third was quadrupole, quad. And you should remember Legendre polynomial के फॉर्म में, ताकि गलती ना हो. This is P0, this is P1. So 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 by RQ. Now it's किसका चांस आ गया? R dash square. You see, just to maintain the dimension. And this will be half 3 cos square theta dash minus 1 rho dash and d tau dash. So you can remember it with utter simplicity if you know the Legendre polynomial. And I hope ये सबको पता है that P0x is x, P1x is P0x is 1, P1x is x, X. and P2x is 1 by 2 3. 3x square minus 1. In our case, x is equal to cos of theta. Clear? अब जरा बताओ, Yes, sir. इनको ये सब continuous charge के लिए हैं. They are for continuous charge configuration. So let us write them, all of them, for discrete charge also. ऐसा भी तो हो सकता है कि discrete charge का system हो रही है, right? So अभी देखो हम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि वी हैव डिराइव्ड. पहले हम क्या करते थे, डिस्क्रीट हमें आसान लगता था ना. वी यूज्ड टू डिराइव डिस्क्रीट फर्स्ट देन कंटीन्यूअस. दिस टाइम वी डायरेक्टली वेंट इनटू लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, डिराइव्ड द कंटीन्यूअस dipoles systems, dipole, quadrupole, monopole, and then I am going to discrete thing. So what will be the potential? इसको ध्यान से देखो. This is just charge, right? ये क्या है? 1 upon r. So this is just charge, right? So अब discrete system में देखो जरा. So this is charge, this is dipole moment, and this is, tell me, quadrupole moment. भाई this is total charge. ये क्या defined होता है? Dipole moment. इसको क्या define करेंगे? Quadrupole moment. So let us write all of them in discrete system. Okay, so let us write them in discrete system. So potential for mono will become, this is just charge, bolo, 1 by 4 pi epsilon naught q by r. This is just total charge, right? Yes, sir. V dipole, what it will become? V dipole 1 upon 4 pi epsilon naught. So this is just dipole moment. So how to write them? So I will write 1 by r square, and this will be summation, yes, ri into qi, where ri is position of charge. So ri will be the position vector. This will be the dimensionless position vector, because dipole का क्या होना चाहिए? It should be 1 upon 4 pi epsilon naught 1 by r. pi. Sorry, dipole moment है ना, pi. V dipole is ri pi. Correct? ये ri cap dot pi लिखा है ना. Yes. RIQI होगा सर. No, no. RIQI होना चाहिए. No. This is dipole potential ना. तो potential को कैसे लिखोगे? R cap direction. Okay. This is okay. Yes, sir. P is Q into R. Okay. Okay. ये कैप है सर, R कैप है. हाँ, r cap है, ri cap है. Okay. So all terms of ri dot pi लिख देंगे, ठीक है? So what will be Yes, V sir. quadrupole? ये बताओ जरा. What will be V quadrupole?
1/4 pi epsilon naught 1 by r cube. Anybody knows? एक सेकंड चौक. Yes, बताओ भाई. Into q I. So it will be 1/4 pi epsilon naught 1 by r cube, right? अब इस चीज को Yes, sir. लिखना है. We have to write this thing in the form of summation. Okay? So how to write it? अब जैसे ये देखो कैसे लिखा है, r और ये q, ये मिलके कहीं ना कहीं क्या बन जा रहा है, p बन जा रहा है, राइट? और बिकॉज ऑफ दिस cos के लिए मैंने क्या कर लिया है, आर आई कैप लिख के डॉट लगा लिया है ताकि वो cos के टर्म को रिप्रेजेंट करे, राइट? सो अब बताओ जरा, दिस विल बी summation I comma j is equal to 1 to 3 because there are 3 coordinates, and this will become ri cap rj cap, okay, and qij. ये q दूसरा q है, चार्ज वाला नहीं है, okay. This is known as, so like this is dipole moment, that is quadrupole moment, okay. So how we define a dipole moment, qi? Anybody knows how to do So this? qi into t. Summation ri qi, right? This is the dipole moment. Yes, sir. And how to define this quadrupole moment q? ये बहुत ही important है. How to write the quadrupole moment in the discrete form, which I have written qij. This is equal to summation k. अब ये मैं इस चीज को लिख रहा हूं, okay? And 3 times x I k x j k minus del I j and r k square and q k. Okay, now let me explain you. So monopole is related to charge, dipole is related to dipole moment, and quadrupole is related to quadrupole moment. So you can see in monopole this quantity is scalar, which is a charge. In dipole this quantity is a vector. In this it is vector, and this quadrupole, this is a tensor. Okay, so like this has 1 term, this has 3 terms, and this will have 9 terms, qij, right? So we will have to calculate this value of qij for to get the quadrupole moment, and it is written using this. ध्यान से देखना, it is written using this. So all these terms I will, because ये सिर्फ notation है, इस x को x मत समझना. अब what is k? ध्यान से देखो, k किस पे लगा हुआ है? qk. 2 पर. मतलब कि ये अलग अलग चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज. k means kth charge, first charge, second charge, third charge, fourth charge. So this is the kth charge, and rk is that 3-dimensional xk square plus yk square plus zk square, and this xik, ध्यान से देखना जरा, ये i और j जो है ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है. जैसे आपने पहला चार्ज ले लिया तो पहले वाले का i और j लेंगे. तो जैसे मान लो ये लोकेशन 1 1 है तो इट विल रिप्रेजेंट x, ये 2 2 है इट विल रिप्रेजेंट y, ये 3 3 है इट विल रिप्रेजेंट z, ये 1 2 है इट विल रिप्रेजेंट xy. ये तो i j k will run from 1 1, 2 2, 3. and 3. So this is quadrupole moment. So what will be the dimension of quadrupole moment q? Coulomb So qk r square. meter square. Meter. Because you see, this is coulomb
and this is meter squared. So every time you get the quadrupole, it will be in the form of coulomb meter square. So मैंने आपको कल भी बताया था कि there is a charge system और उसके अंदर की इंफॉर्मेशन को आप अलग अलग टर्म्स के फॉर्म में लिख रहे हो और सबका टोटल सम will represent the potential. So is this clear? ये वाला मैंने डिराइव कर लिया था and this I have written because again अगर मैं डिराइव करूं तो it will take another one class, so that's why ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली लिख लिया है, but because आपको ये दिख रहा है तो इसका भी आइडिया आपको हो रहा है. Yes? सर वो 1/2 किधर गया? Sorry? सर 1/2 फैक्टर. हाँ 1/2 फैक्टर सर रहेगा. लाइक 1/2 Yes, sir. फैक्टर रहेगा. So I should write it here. यहाँ पे लिख लेना चाहिए मुझे 1/2. Okay? It is here. यस सर. This 1/2 factor is here. यहाँ लिख लो. So अब क्या करें? कोई सिस्टम ले और उसका जरा देखें, मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रुपोल टर्म्स, राइट? यस सर. इसी से समझ में आ जाएगा. So let us take a problem. I am taking one problem in which there is a sphere, okay, centered at origin. अब आपकी वो दिक्कत दूर हो गई, डैश वैश लगाने वाली. Centered at origin आ गया, and radius is r. Radius is capital R, and so this is a sphere, and we have to get the potential somewhere on this z-axis. This is z-axis at some point P, and this is origin, and this distance is z. Okay, we have to get potential over there, and the charge density is given rho r comma theta is given to be kr over r square, and r minus 2r and sine of theta. This is a very nice problem, and it will tell you everything. Whatever we have done till now, it will explain you everything. Okay? So please see this. Understand this problem. एक charge system दिया हुआ है, this. We don't know what type of distribution is this. We have to understand. So हमें क्या करना पड़ेगा कि एक एक करके we will have to see what are the contributions of different terms. Like सबसे पहला monopole के लिए क्या required है बताओ? What is required for monopole? सर रो एंड टाउ. Calculate करो जरा. Let us do it one by one. Just a second. So let us get the monopole first. It is total charge. It will be integral rho d tau. Okay, so this is simply in our coordinate system. We know where is center, we know what is the radius. Okay, so let us get it. Q is equal to integral rho लिखो जरा, k r by r square, r minus 2r. देखें क्या इंफॉर्मेशन निकल के आती है. d tau is r square sin theta, d theta, d phi and dr. Right? So this will cancel, and the integral will be
0. 0. So यहाँ पे पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना. So it will become KR RR minus R square, R square. 0 to R, right? And you see, if you put the limits, upper limit and lower limit both will become 0. Otherwise you will have to integrate this also, 0 to pi and sine square theta d theta, and also 0 to 2 pi d phi, right? But उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. Why? Because this term is equal to 0. So net charge of this system is 0. ये information निकल के आ गई. Q total is equal to 0. So what is contribution of monopole potential? 0. 0. The contribution of monopole potential is equal to 0 हो गया. ठीक है ना? Next पे आगे बढ़े. Yes, sir. अगला करते हैं. So what about the dipole? What about the dipole? So dipole term में what we have to calculate is integral, बोलो, R Sir, R cos theta, rho R. cos theta and rho and d tau. This is what we have to calculate as dipole moment, right? Yes, sir. Ab in this case, I can drop R dash because you know this is your well-known system. This is your theta, that is your phi thing, everything you know. So इसको करते हैं जरा. Let us do this. So it will become P is equal to integral R cos theta. Okay, what is rho? It is KR by R square R minus 2R sine theta, and what is d tau? R square sine theta d theta d phi and dr. Okay, this is the integral that you want to do. Yes. So this Yes, will sir. cancel, and you have to integrate this time 3 terms. पहले तो ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से r, फिर ये 0 से pi, and then this 0 से 2 pi. So again, what is going to change is integral. ये क्या हो जाएगा? It will become r r minus 2R square. 2r square and dr, and this term and this term. Okay. Yes, sir. So ये क्या बन जाएगा? It will become integral R square by RR 2. square by 2. so r square by 2 r r. Minus. So it will become r cube. पहले लिमिट नहीं लगाता हूँ. r square by 2 minus ये क्या बन जाएगा? 2 by 3R square. 2 by 3 r, no cube, r cube. Yes, sir. Yes, sir. ये पहला टर्म हो जाएगा from 0 to r. So is this becoming 0? No, sir. No, sir. No. कोई बात नहीं. दूसरे टर्म को देखते हैं. Let us see the second term. So that is 0 to 2 pi, 0 to pi, and क्या क्या है? Sin square theta cos theta. Theta. Sine square theta and cos of Cos theta.
theta d theta, and third term is 0 to 2 pi and d phi, right? So let us integrate this. तो इसमें सेकंड टर्म 0 आएगा क्या? करके देखना पड़ेगा। Yes, sir. ऐसे कैसे कहोगे? अगर निकाल पाए हो तो ही बता सकते हो कि आएगा 0 कि नहीं आएगा। एक स्टेप Sir, sin थोड़ा सा of theta कंफ्यूजन by था। So it will become 0 to pi, और इसको क्या लिख लें? x square z square. Substitute कर दो sir. Sin सब्स्टिट्यूट theta. कर दो। साइन थीटा को क्या लिख दें? साइन थीटा को t Z. लिख दें, राइट? Yes, sir. So cos theta d theta will become dt, correct? So it will become integral, बोलो भाई, t square 0 to 0. and dt, Yes, sir. and sin है ना, 0 to 0. तो it will be 0 at both, so obviously मतलब that has become 0, so second term will become 0, right? So this term will become 0 and this term will become non-zero, so that's why this will become 0. So contribution of dipole potential is also 0. So this is not giving any monopole term in potential, not giving any term in dipole potential. Okay bhai? Yes. Yes, And sir. third we should go for quadrupole. So अभी देखो आपको लिखना आ गया ना क्वाड्रुपोल। याद, जैसे ही लिखने के बारे में सोचोगे किसको याद करोगे? Legendary polynomial second लेजेंडर term. पॉलिनोमियल का सेकंड टर्म ना। सो व्हाट विल बी दैट क्वाड्रुपोल टर्म? इट विल बी इंटीग्रल r स्क्वायर, R is और 1 यहाँ by 2 cos squared theta minus 1. 1 by 2, 1 by 2 1 by 3 2 cos squared theta 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, rho beta. और यहाँ पे रो आ जाएगा विच इज k r बाई r स्क्वायर r माइनस 2r साइन थीटा इनटू r स्क्वायर sin theta d theta d phi and dr. So this is your quadrupole term. So let us see if it survives. Hopefully this is quadrupole terms. इसको क्यों quadrupole लिखना, confusion नहीं होना चाहिए. Okay, now this r square will cancel ना by this. अब देखो जरा क्या क्या बचेगा. r वाले टर्म में क्या बचेगा? q quad is equal to, check. सबसे पहले kr r minus 2r and r square ना, Yes, sir. r square dr. एक ये टर्म हो गया. दूसरा टर्म बोलो, इंटीग्रल हाफ 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin थीटा Sin sin square. square theta and d theta, right? So this is from 0 to r, this is from 0 to pi, and this is from D. 0 to 2 pi and d phi. देखो कोई टर्म छूटा तो नहीं? Everything is okay? No term is left? Yes, sir. सारे टर्म्स इंक्लूड हो गए ना? अब बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ये बताओ कितना आ रहा है? डू इट क्विकली. Sir, r to the power 3 minus sir, r to the power 4 by 3 minus r to the power 4 by 2. सर k r की पावर 5/6 माइनस में
Anybody else can tell what is this value? Yes, sir. कितने आ रही है? Yes, Sir, sir. K- Minus 1/6 into kr to the power 5. -1/6 Kr K to the power 5. r to the power 5. तो डायमेंशनली ये है स्क्वायर 5, ठीक है। डायमेंशनली इट शुड बी 5। और किसी का आ रहा है भाई? देखो जरा जल्दी से करके। इट इज अ सिंपल इंटीग्रल, नॉट अ टफ वन। Yes, sir. सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म तो सबको पता ही है क्या होगा। सेकेंड टर्म देखते हैं जरा। सो इट विल बिकम इंटीग्रल 1/2 3 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लें इसको, राइट, ताकि दोनों एक हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। Yes, sir. तो व्हाट इट विल बिकम? 3 माइनस 3 Sir, साइन 2 स्क्वायर minus. थीटा। अरे इसकी जगह भाई कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। Yes, sir. एंड -1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इज दिस ओके? सो दिस विल बिकम 2 माइनस ना, बोलो। यस, सो दिस विल Yes, बिकम sir. 1/2 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा एंड डी थीटा। देखते जाना भाई, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इज दिस ओके? Yes, sir. And so it will become, if I integrate it from 0 to pi, it will become half is outside. This will become 2 times upper limit by 2 sin square है ना। Yes, sir. sir, integrate तो हुआ ही नहीं सर। है? इंटीग्रेट तो हुआ ही नहीं सर अभी। Okay. सॉरी, क्या कह रहे हो भाई दीपक? सर इंटीग्रेट तो हुआ ही नहीं सर डायरेक्ट। अरे sin स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to pi ये तो 50 बार यूज करते हो। हाँ ठीक है सर, ठीक है अपर लिमिट बाय ठीक 2। है ठीक है। हाँ सर सर ठीक। Okay, ठीक है, and next ठीक। one is -3. It will become -3 and sin to the power 4 है ना। Upper limit by 4. It will become pi by 8। 4 आ गया ना जब रिडक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो पाई बाई, इट विल बिकम 3 तो आगे है ही। इट विल बिकम पाई बाई 8 साइन टू द पावर 4 थीटा थ्री पाई बाई 8। सो दिस 3 इज ऑल्सो देयर। सो क्या हो जाएगा टोटल? 9 पाई बाई 8। ओके, सो व्हाट विल दिस टर्म गिव, ये बताओ। You have now the theta term। अब तीनों को जरा, तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करके बताओ जरा v क्वाड्रुपोल क्या आएगा तीनों को। व्हाट वाज द फर्स्ट टर्म? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट विल बिकम R cube. R cube. k, नहीं r क्यूब कैसे? Hello, sir. r क्यूब तो चला गया ना उस वाले इंटीग्रल में, और 0 to r लिमिट लग गई।